Gulabi Gang is a documentary directed by Nishtha Jain. It shows the life of Sampath Pal Devi, who is the founder of this group. The women of Gulabi Gang wear bright pink saris and arm themselves with bamboo sticks, which they use whenever they come against violent resistance. They fight for the right of poor, including women and Dalits, sometimes called untouchables. The filmmaker employs simple technique that demands involvement on viewer's part. Various shot of village, its people, field, children, and farming serve as a reminder of normalcy. The sound of this documentary comprises of spoken words, ambient sound, and folk songs. In one of the early scenes in Gulabi Gang, we see Sampath Pal Devi sitting amongst the bunch of women, talking to them and urging them to join the group. जब उनकी खुद की जिज्ञासा होगी तो हम सदस्य बनाएंगे. During this course, for a fleeting moment, she quickly steals a glance at the camera. It's an important little sequence because the camera suddenly acquires an identity here, as its presence has been acknowledged. And this is not the only time in the documentary when the character becomes conscious of the camera watching them. In the subsequent scene, a police inspector wants the camera to stop rolling. अब ये बहुत बड़ी घटना हुई है लेकिन ये रख दो हमारी बात इसमें ना करो कुछ. A villager keeps looking at the camera. Similarly, another villager stealthily looks at the camera when he's cornered by Sampath Pal. अरे यार आगे लगाओ थे मरे तो चुप नहीं बैठ जाता करंट ना हुआ भागते हो कब दस मचा दिए लफा उड़ते हैं. It is impossible not to wonder if the feature authorities would have behaved differently if there were no cameras. But I suppose every documentary must cope with this inevitable margin of errors. And given that we are watching a documentary which functions by documenting the moment or truth, if we will, we want a complete understanding of the situation. It's also interesting to know what truths the director is more concerned with. The camera enters a dark hole where the girl was died. The death was caused by burning. The camera performs the perfunctory function, concentrating on the character speaking. ये परपंच से काम चली ना और नहीं ये चल पाई तुम्हार. But as the scenes acquire more grim tone, the camera's role and subsequently its importance increases. Will the filmmaker choose to show us the shrouded body? The scene suddenly acquires another dimension and spawns a different set of questions. Some things you would probably not be asking yourself in a feature film. गलती करें बहुत बड़ी गलती है. उनके माँ बाप हैं कहाँ? जी आ रहे हैं. कहाँ पर हैं? One particular instance involves a father of the murdered teenager girl who adamantly believed it was her destiny. He drives away in the tempo after refusing to cooperate with Devi, and the camera pans to the curious bunch of onlookers in the field nearby. All of them are the men of different ages. Gradually, they disappear as the camera continues to linger on them. The youngest of them, a teenager, remains. Since Gulabi Gang plays out more like a narrative feature than a conventional documentary, what sets apart Gulabi Gang is the consciousness of its filmmaker, or the fact that she's present in some of the scenes of the documentary. But Jain's presence in a few scenes helped the film
more than anything else because viewers want someone to ask questions for them. आपको क्यों बुलाया लेकिन उन्होंने? आपसे क्या चाहते? अरे क्या चाहते थे? ये हुआ कि अब हमको बचावें अवावें। एक औरत मरी है यहाँ पे औरत मरी है तो उसके घर वालों का, उसके मायके वालों का, औरत के दादा का, औरत के पिता का, औरत के भाई का ये कहना है कि हमारी लड़की जो है कभी आज तक हमसे कोई शिकायत नहीं की। ऐसे केस में कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है? कतई नहीं होगा। होना भी चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। And although it disturbs the aesthetics of the documentary a little, nothing can be more disturbing than not knowing the truth or knowing the half-truth. और नहीं भी बचा सकते। Gulabi gang also bears open the conflict of the people in Bundelkhand. ये महोबा से आए हैं, यहाँ कोई इनकी मीटिंग थी। ये कह रहे हैं कि ये कौन सा ग्रुप, गुलाबी ग्रुप है इनका, ये बता रहे हैं भगवान जाने। और फिर इनको महोबा जाना पाया, देखिए संघर्ष से अन्न पानी बदा, वो फिर खा के बेचारे चले। पूछना चाहते हैं कि गुलाबी ग्रुप से आज तक आपको कोई फायदा मिला? फायदा कुछ नहीं मिला तो बस ये क्या बताएं, बताओ भगवान रक्षा। कितने लगन प्रिय आप लोग कि बताओ कोई फायदा नहीं, फिर भी गुलाबी ग्रुप लिए पड़े। By the time the documentary gets over, we understand their primary conflict, which the director explains very well with the use of text on screen. हमें नहीं जाना चाहिए गुलाबी गैंग में कि तुम अपने मतलब की यार बन गई, दूसरे को जो है कह लगी कुछ दिन के लाने लग जाओ। जैसे इन्होंने कह दिया अपने माँ बाप से नहीं मिलो, अपने भाई को छोड़ दो, बुरा हो या भला हो, या हम एक पेट में पाँव फैलाए हैं कोख में, और उसी में हम पले, उसी में पला, किस तरह हम छोड़ दें? या अगर हमारा भाई मारा जाएगा तो हम उसके, हमारे अगर गोली लगती हुई तो अपने भाई को बचाएंगे पहले। In a scene that can only be categorized as horrifying, हमारे परिवार में नहीं हुआ ऐसा कि बच्ची कुछ भी करें, भाई आंखों से देख लें, या उनको आंखों बस पट्टी डाल के पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं होता ये, हमारे यहाँ तो ये होता है कि मरो मारो। Jen explicitly asks her, अगर एक लड़की सयानी भी हो गई, उसने लव मैरिज भी कर ली, तो क्या उसको मार देना चाहिए क्या? हम लोग जिंदगी भर को छोड़ देंगे? छोड़ना बात तो एक अलग। Husna fumbles for a moment but finally अब उनके बच्चों के settles on her answer. खून की धमस आ गई कि हमें हमारे परिवार में हमारी बहन ने गलत किया, तो उसमें क्या वो मार भी सकते? Thank you so much for watching.